Good morning, students. Today, we are going to start a new chapter, chapter number 2, Elementary Concept of Objects and Classes. In the previous video, we have completed our question answers, and I hope you all have done. So, now moving on to the next chapter. In this chapter, we will study about objects, types of objects, classes, and how to create the object belongs to a particular class. So here it is. Starting with the first topic, what are objects? So objects is a fundamental unit of object oriented programming, means OOP, and represents the real life entities. In OOP, the attempt is to make a task into some components. We have discussed that we are having two types of languages, low level and high level language, and OOP is one of the language, that means high level language, right? And the basic concept of OOP language is to divide a problem into a number of small modules, यानी कि एक problem को multiple modules में multiple parts में break किया जाता है into small components where each component is known as what? A object. So in object oriented programming, a bigger task is divided into smaller components, and each component is known as object, right? And the another name of object is entities. Another name of object is entity, given here. Entities, here it is, right? So the another name, this question is in your fill in the blanks, that what is the another name of object? So here it is, entities, right? Now objects are further categorized into two ways: real world object and software objects. Now starting with the first one, real world object which we experience or use in our day to day lives, यानी कि ऐसे ऑब्जेक्ट जो हम डेली देखते हैं अपनी डेली लाइफ में, मतलब जो हम चीज़ें एक्सपीरियंस करते हैं, दैट बिलोंग्स टू अ रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट. नाउ इट हैज़ सम फीचर्स, इट इज़ विजिबल टू अस. Any real world entity that we can see is a real world object. Second feature is it has a definite shape and size. कोई भी चीज़ जो आपके इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती है, ठीक है, उसकी अपनी कुछ एक फिक्स्ड शेप होती है, अपनी कुछ एक फिक्स्ड साइज होता है, और that can also be visible. Next, here are some examples for a real world object like tiger. It has a particular shape, particular size, and we can see this entity, so it is a real world object. Moving on to next, cycle is a real world object. Car, clock, all these are the examples of real world which actually exist in the real life that we experience in our day to day life, right? Now next point is each real world object contains characteristics and behaviors. अब हमने डिस्कस किया था इन द previous video that each and every object will have certain characteristics and certain behaviors. Now characteristics means what? Characteristics means the features of it, that means the features or the attributes of it, and behavior means the use of it, right? Look at here the definition for characteristics and behavior. Characteristics basically comprises the parts of its body. Parts of its body is called characteristics, and behavior is the purpose of use in its function, that means purpose of its use. So behavior matlab uses and characteristics means parts or features. Now here one real life example or real world object, that is cell phone, also known as mobile phone. It is a real world object which has some characteristics and some behavior. So now here we are going to discuss about what are the characteristics. Now tell me क्या क्या characteristics हो सकती हैं एक मोबाइल फ़ोन की, क्या क्या features हो सकते हैं? तो देखिए मॉडल, इसके characteristics हैं, डायल पैड, ऐप, these are the characteristics. Like we can also say about color, this is also a characteristics. We can say about size, this is also the another characteristic, right? And camera, another characteristic, right? So features of a real world object are called characteristics. Now next is behavior. So behavior, that means use. Now for what purpose we actually use mobile phone? Used to talk, used to browse internet, used for net banking. So these are the uses of mobile phone.
So each and every object will have some characteristics and some behavior. I hope this is clear. What is real world object? Real world object are the entities which exist in the real life, that we can see, that are visible to us, that we can experience daily. Okay, and each and every real world object will have its own characteristics and its own behavior. Clear about it? Moving on to next, one more example here. Consider table एज एन ऑब्जेक्ट. अब टेबल क्योंकि हम डेली लाइफ में अपनी देखते हैं, तो टेबल भी क्या है, एक रियल वर्ड ऑब्जेक्ट है. अब इसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं? इट हैज़ अ प्लेन ग्लास टॉप. ये इट हैज़ 4 लेग्स. इट इज़ मेड अप ऑफ वुड. कैरेक्टरिस्टिक्स हैं सब इसकी. मूविंग ऑन टू द बिहेवियर ऑफ इट. नाउ बिहेवियर मीन्स यूज फॉर what? To keep copies and books for study purpose, to keep glasses and plates. These are the behaviors of it. So it is another example of real world object. Done? Okay. Now one more thing. Here, the objects described above like table and mobile are non-living things. Broadly speaking, the living things are also considered as real world objects. So do not think that real world objects are only the non-living things. So real world object consists of both. That means it describes both the type of entities like living things and non-living things. For example, if I say about a person, about any student, about any employee, about a teacher, so that is also a real world object. सारी ये चीज़ें आप real world में भी तो देखते हैं. स्टूडेंट है, एम्प्लॉय है किसी ऑर्गेनाइजेशन का, कोई स्टूडेंट टीचर है. सो ये सब क्या है, रियल वर्ल्ड में भी एग्जिस्ट करते हैं. दीज ऑल आर लिविंग थिंग्स. सो दिस इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट. नाउ हियर इट इज. A student may be considered as a object. Which type of object? Real world. ठीक है. कैरेक्टर्स देखो स्टूडेंट की क्या हो सकती हैं. उसका नेम, क्लास, रोल नंबर. बिहेवियर of a student: he goes to school, appears for the examination and takes part in the different competitions. So these are the behavior of a student. की स्टूडेंट क्या क्या करता है, स्टूडेंट के क्या क्या काम होते हैं, तो स्टूडेंट के ये सब क्या है, बिहेवियर है. राइट. Now real world object is over. Moving on to the second type of object here, software object. Right. Now software object may be defined as an object that is created while writing a Java program. Means such kind of objects that are created when we write a Java program. जब हम कोई Java program बनाते हैं तो उस टाइम पे हम जो objects create करते हैं that are known as software objects, and these software objects are actually not visible to us. Means we cannot experience those in our daily life. हम उनको अपनी daily life में experience नहीं करते हैं. ठीक है, वो कैसे होते हैं, सॉफ्टवेयर ऑब्जेक्ट्स होते हैं. राइट. नाउ द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बिहेवियर ऑफ रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट आर रेफर टू एज डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शंस ऑफ सॉफ्टवेयर ऑब्जेक्ट्स. इट मीन्स व्हाट, इसका क्या मतलब है. लुक एट हियर विद दिस एग्जांपल, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट. नाउ दिस डेफिनेशन सेज व्हाट, कि जो रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट होते हैं, अभी हमने पढ़ा कि रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट विल हैव इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ओन बिहेवियर. नाउ in terms of software object, these characteristics becomes the data members and the behaviors of real world object will become the functions. Repeating one more time, जो रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट में कैरेक्टरिस्टिक्स और बिहेवियर होते हैं वो एक्चुअली सॉफ्टवेयर ऑब्जेक्ट्स जब हम कंसिडर करते हैं उनको, तो जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो उनको हम क्या बोलते हैं, डेटा मेंबर्स. और जो बिहेवियर्स रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट के होते हैं वो सॉफ्टवेयर ऑब्जेक्ट्स में क्या कहलाते हैं, नोन एज फंक्शंस. क्लियर दिस पॉइंट. ठीक है. तो रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स में कैरेक्टरिस्टिक और बिहेवियर टर्म्स को यूज़ करते हैं. सॉफ्टवेयर ऑब्जेक्ट में वी यूज़ द टर्म्स डेटा मेंबर्स एंड फंक्शंस. राइट. नेक्स्ट. So here it is given. Hence a software object is a unique combination. सॉफ्टवेयर ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं. Software object is a unique combination of data members and functions, also known as methods. Right. And here this circle form में one diagram is given. Here we are having data members. Now tell me, what is the another name of data members? That means these data members are known as characteristics in real world object.
characteristics in real world object, and these functions or methods in real world object are actually known as what? Behavior. But this is for real world object, and this one is for what? Software object. Right? Moving on to next. Now look at here. One example is there, real word book. एक एग्जाम्पल लिया हुआ है बुक, और उसको कंसिडर किया गया है दैट बुक इज़ अ रियल वर्ड एग्जाम्पल, दैट मीन्स इट इज़ अ रियल ऑब्जेक्ट. एंड वन वी हैव टेकन हियर स्टूडेंट एंड वी हैव कंसिडर्ड इट एज सॉफ्टवेयर ऑब्जेक्ट. ठीक है, कोई भी किसी में भी हो सकता है. स्टूडेंट हम रियल वर्ड में भी ले सकते हैं और हम सॉफ्टवेयर में भी ले सकते हैं. इन द सेम वे बुक ऑल्सो वी कैन टेक इन रियल वर्ड एज वेल एज इन सॉफ्टवेयर ऑल्सो. ठीक है, बट वी आर कंसिडरिंग हेयर बुक एज रियल वर्ड एंड स्टूडेंट एज सॉफ्टवेयर ऑब्जेक्ट. क्लियर है? अब देखो, अभी हमने क्या डिस्कस किया था कि जो रियल वर्ड ऑब्जेक्ट होते हैं, real word object will have its own characteristics. Characteristics are also known as states actually. So will have its own characteristics and own behavior. राइट. सॉफ्टवेयर ऑब्जेक्ट्स में जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं दैट विल बिकम योर डेटा मेंबर्स, एंड जो बिहेवियर्स होते हैं वो क्या बन जाते हैं? फंक्शंस. राइट. नाउ हियर कैरेक्टरिस्टिक्स. सो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी बुक्स की? चैप्टर्स. हाउ मेनी चैप्टर्स आर देयर इन अ बुक, हाउ मेनी पेजेस आर देयर इन अ बुक, हाउ मेनी टॉपिक्स आर देयर. राइट. Next is behavior of it. तो what is the behavior of a book? That means for what purpose we use book. हम book किस लिए use करते हैं? To read and to prepare notes. Is that clear? This is real word object, book. सॉफ्टवेयर ऑब्जेक्ट अगर हम स्टूडेंट की बात करें तो स्टूडेंट में जो डेटा मेंबर्स होंगे वो एक्चुअली होती तो कैरेक्टरिस्टिक्स ही है, बट वी कॉल्ड इट एज डेटा मेंबर्स. सो व्हाट कैन बी द डेटा मेंबर्स फॉर स्टूडेंट? स्टूडेंट की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, या आप कह सकते हो डेटा मेंबर्स. व्हाट आर दोज डेटा मेंबर्स? नेम, सब्जेक्ट्स, मार्क्स. नेम, सब्जेक्ट्स, मार्क्स. वी कैन ऑल्सो टेक केयर व्हाट? रोल नंबर. रोल नंबर भी हो सकता है भाई, स्टूडेंट का रोल नंबर भी तो होगा अपना. वी कैन टेक क्लास ऑल्सो. राइट. सो दीज आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ डेटा मेंबर्स ऑफ अ स्टूडेंट. नाउ व्हाट इज द बिहेवियर ऑफ इट? बिहेवियर क्या हो सकता है? अब देखो, बिहेवियर जो होता है एक्चुअली दैट इज टर्म्ड एज फंक्शंस इन सॉफ्टवेयर ऑब्जेक्ट. अब जो फंक्शंस हम बनाते हैं वो किस तरीके से बनाते हैं? हम वी विल नॉट राइट लाइक दिस इन द फॉर्म ऑफ सेंटेंस, वी विल नॉट राइट इट. रियल वर्ड ऑब्जेक्ट में क्या होता है? वी राइट द बिहेवियर इन टर्म्स ऑफ द सेंटेंस, बट हियर in case of software object we will not write in the form of sentence, we have to use a single word or two words maximum to describe. ठीक है, तो हम functions बनाने के लिए remember one thing that we will give a name. कोई भी एक नेम, जैसे हमने दिया एक्सेप्ट, एक्सेप्ट है ना, and put the parenthesis here. Parenthesis means round bracket. So when after any name if you will use bracket just after that, then it will become a function. Let me clear you again. Look at here, functions. For example, I can make here input. Input is actually used to get the details of a student, right? And if I put parenthesis here, so it will become a function. So now input is actually a function of software object student, right? Now in the same way I can also make here output. अभी जो हमने इनपुट से डिटेल्स ली थी वो हमें क्या करनी है? प्रिंट करनी है. आई वॉन्ट टू प्रिंट द डिटेल्स ऑफ स्टूडेंट ऑब्जेक्ट, सो आई विल मेक अ फंक्शन आउटपुट. उसका नेम रखा है क्या? आउटपुट, और उसके आगे क्या लगाया हमने? पैरेंथेसिस, दैट मीन्स ब्रैकेट, राउंड ब्रैकेट्स. सो किसी भी नेम के आगे, मतलब किसी भी वर्ड के आगे इफ़ आई पुट द पैरेंथेसिस लाइक दिस, इट विल बिकम व्हाट? अ फंक्शन. नाउ लुक एट हियर. In case of real word object, this is real word object and this is software object, but here we are not using these brackets,
है ना, यहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, ब्रैकेट्स। तो फंक्शंस आप ध्यान रखना, फंक्शंस वेन एवर वी विल मेक इट वी विल ऑलवेज यूज दिस पैरेंथेसिस एंड दिस नेम एक्सेप्ट और डिस्प्ले दैट डिपेंड्स ऑन अस। ये हम पे डिपेंड करता है कि हम क्या देना चाहते हैं, लेकिन नेम ऐसा होना चाहिए जो कि रिलेट करे आपके क्वेश्चन से। जस्ट लाइक when I give you a program like कि write a program to input principal, rate and time and calculate the interest। so आप जो नेम लेते हैं principal के लिए P, rate के लिए R, time के लिए T and simple interest के लिए SI, so the names are actually relevant to the questions। in the same way whatever name you will take for the functions that will get relevant to the problem, right? So here of this one example is over for real world and software object. Now next, message passing. So message passing, it is interesting to know that objects can interact with each other. Now you know what, in object oriented programming language we divide a problem into a number of components and each component is known as what, object। यहाँ पे हम multiple objects बना सकते हैं like this and each object will communicate with each other। हर कोई object एक दूसरे से communicate कर सकता है and share the information to each other and this process is called message passing। Like we are having here two objects, first object, second object, this is object number 1 O1, this is object number 2 O2, ठीक है। and you know what, each object will have its own characteristics and behavior। तो characteristics is known as what, data member, ये हो गया data member। behavior is known as function, ये हम सॉफ्टवेयर ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, राइट। in the same way for object 2 it will have its own data members and functions, ठीक है। तो object number 1 wants to share some information to object number 2, so this process of sharing the information with each other is known as message passing। clear? Next, here it is what, class। now very interesting topic again। now a object is a unique entity possessing some characteristics and behavior। you all know each and every object will have its character। बार बार मैं ये चीज़ रिपीट कर रही हूँ, again and again I am repeating that each and every object will have its own characteristics and its own behavior। now it is done with the help of class। means if you want to define some characteristics and behavior of any object, so can be done, it is possible with the help of class only। so what is class? class is basically a blueprint or template for its object। now this thing actually we will discuss later on, what is the meaning of this statement, class is a blueprint or prototype or template for its object, right? but before that you should know that class and object have a close relationship in an object oriented programming system। दोनों ही चीज़ें, जो क्लास है और जो ऑब्जेक्ट है, वो दोनों एक दूसरे से क्लोजली इंटर रिलेटेड होते हैं। कैसे रिलेटेड होते हैं ये भी डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। नाउ बिफोर दैट look at here, we are taking one example, class fruit। class fruit, now class fruit will have its own characteristics and some behavior। अब फ्रूट की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं, कलर हो सकता है, हर फ्रूट का अपना कलर होगा, विल हैव इट्स ओन टेस्ट, विल हैव इट्स ओन शेप ऑल्सो। एंड वट इज़ द यूज़ ऑफ दिस, वाई वी यूज़ फ्रूट्स? सो फ्रूट्स आर यूज फॉर मेकिंग जूस, फॉर फेस्टिव ओकेशंस एंड फॉर ब्रेकफास्ट, ठीक है। सो दीज आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बिहेवियर ऑफ अ क्लास फ्रूट। अब एक चीज़ देखिए, जितने भी फ्रूट्स होंगे, ठीक है ना, दे कैन बी मल्टीपल फ्रूट्स, बहुत सारे फ्रूट्स हैं, ठीक है। अब हर फ्रूट्स के जो आपका क्या होगा, अभी हमने डिस्कस किया था कि एक्चुअली ये क्या है हमारे पास, ये है क्लास। क्लास क्या है, फ्रूट, है ना। उसके नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स होंगे लाइक O1 वी कैन हैव O2 देन O3 देन O4, दीज ऑब्जेक्ट्स, है ना। एंड वी नो वर्ड दैट ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट विल हैव इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ओन बिहेवियर। सो फॉर दिस O1 will have its own characteristics and behavior, for this O2 it will have its own characteristics and behavior, so same for
O3 and same for O4, same characteristics and some behavior, right? ना क्लास फ्रूट जो आपने बनाई है, फ्रूट्स तो कई तरीके के हो सकते हैं। तो ऐसे ही अगर हम बात करें तो अगर हमने यहाँ पे लिखा है O1, O2, O3 और O4, तो हम कंसिडर कर सकते हैं कि O1 के लिए लेट अस सपोज वी आर टेकिंग अ फ्रूट मैंगो, दिस इज O1 ऑब्जेक्ट एक, ठीक है। ऐसे ही O2 के लिए सपोज वी आर गोइंग टू टेक हेयर बनाना, देन वी आर गोइंग टू टेक हेयर guava, and here we are going to take suppose pineapple, right? So we are having mango, banana, guava and pineapple, and these will be what? This will be objects. लेकिन क्लास क्या है आपकी? फ्रूट है। अब क्लास की अपनी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स और बिहेवियर है, तो ऑब्जेक्ट्स की भी तो अपनी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स और बिहेवियर होंगी। अच्छा, अभी हमने डिस्कस किया कि जो क्लास फ्रूट था उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कलर, टेस्ट और शेप, है ना। तो मैंगो की अपनी कुछ कलर, टेस्ट और शेप होगा, है ना। सेम बनाना के लिए भी अपना कलर, टेस्ट और शेप होगा, सेम फॉर गुआवा एंड सेम फॉर पाइनएप्पल, ठीक है। तो आपने क्या देखा कि जो क्लास फ्रूट था, ठीक है, क्लास फ्रूट जो था आपका एक्चुअली, वो जो भी चीज़ें डिस्क्राइब कर रहा है वो सेम सारी चीज़ें ऑब्जेक्ट्स भी फॉलो कर रहे हैं। मतलब क्लास ने अगर 3 कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइन की हैं कि हर ऑब्जेक्ट की अपनी कलर, टेस्ट और शेप होगा, तो हर ऑब्जेक्ट, चाहे वो मैंगो हो, चाहे वो बनाना है, या वो गुआवा है, या वो पाइनएप्पल है, हर किसी के अपनी ये 3 चीज़ें ज़रूर होंगी, दैट इज़ कलर, टेस्ट एंड शेप। This is how actually you can say that objects and classes are closely interrelated to each other. क्यों? क्योंकि जो भी चीज़ें आपकी क्लासेस ने डिफाइन की हैं वो सारी चीज़ें ऑब्जेक्ट पजेस करता है, right? We will try to understand it with one more example. Now moving on to next, before it, now example is given here, look at this fruit. We have taken here fruits. So fruit is a class and each class can have number of objects like this, है ना। यहाँ देखिए, this is object number 1, object number 2, 3, 4, right? Now each objects of the class fruit will have डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड कॉमन बिहेवियर, एंड यू नो वॉल कि हर जो ऑब्जेक्ट होगा विल हैव इट्स ओन डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। ऑब्वियस सी बात है, जो कैरेक्टरिस्टिक एप्पल की होंगी वो बनाना में तो नहीं हो सकती हैं, कुछ हो सकती हैं बट नॉट ऑल। जैसे कॉमन क्या हो सकती है कि कलर हो सकता है, लेकिन कलर होगा तो डिफरेंट ना। बनाना का जो कलर होता है दैट इज़ वॉट, येलो एंड ग्रीन, बट एप्पल का कलर इज़ ग्रीन एंड रेड जनरली, है ना। सो दैट मीन्स कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग हो सकती हैं। उसका साइज़ जो है, आपका बनाना का साइज़ अगर आप देखोगे, आप एप्पल का साइज़ देखोगे, सो दैट इज़ डिफरेंट, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स मे बी डिफरेंट बट बिहेवियर इज सेम, दैट मीन्स यूज़ इज सेम। यूज़ हम क्यों करते हैं? यूज़ टू मेक फ्रूट्स, है ना। उसका फ्रूट्स बना, तो मतलब जूस बनाने के लिए, तो जूस बनाने के लिए हम किसी भी फ्रूट को यूज़ कर सकते हैं, तो बिहेवियर तो कॉमन है बट जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी वो क्या होंगी? डिफरेंट। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। नाउ here is how to create an object of a class. So now up to now we have discussed about object, types of objects and how class and objects are interrelated to each other. Now we will discuss how to create the software object. अब देखो, this is the syntax, that is the most important point. ये आपको ज़रूर आना चाहिए, most important है. Look at here. First we write the class name, then we write object name, then we write equal sign, then new keyword, then we write class name, and then we use brackets, and then last में semicolon. This is the syntax and you cannot change the syntax of making the objects, means it is fixed. ये चीज़ ऑलरेडी डिफाइंड है, आप इसको चेंज नहीं कर सकते हो, एंड यू हैव टू लर्न इट एज इट इज़ गिवन इन योर बुक, राइट। नाउ वी हैव डिस्कस्ड, वी हैव टेकन वन एग्जाम्पल ऑफ फ्रूट. सो वहाँ पे जो क्लास का नेम था इन दैट प्रीवियस एग्जाम्पल, व्हाट वाज द नेम ऑफ द क्लास? फ्रूट. सो सिंटेक्स इज, फर्स्ट वी राइट क्लास नेम, सो राइट हियर क्लास नेम एज फ्रूट. डन. नेक्स्ट वी राइट ऑब्जेक्ट नेम. सो ऑब्जेक्ट नेम, अब वी हैव क्रिएटेड अ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, हमने ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए थे लाइक बनाना, एप्पल, ग्रेप्स, पियर, पाइनएप्पल, गुआवा, है ना. दीज ऑल आर ऑब्जेक्ट्स. सो वी कैन क्रिएट एनी ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, लाइक वी आर क्रिएटिंग फॉर एप्पल. So here it is apple, then is equal sign,
Then we use new keyword. So write here new. Then here the class name. What was the name of the class? Fruit. So write here fruits. Fruit hoga to fruit, and if it is fruits, then write fruits. And after that put the parenthesis, that means these brackets, and then at last semicolon. Right? Now in the same way, you will make a next object like this, banana. So class name fruits, object name banana is equal new keyword, after that class name fruits, and then brackets along with semicolon. So this is how you will make the object. Now suppose I have given one question to you, that create an object sound, create an object sound of class mp3 player. Question is create an object sound of class mp3 player. ये क्वेश्चन है आपसे, मैंने ये बोला है कि साउंड एक ऑब्जेक्ट बनाना है, कौन सी क्लास का? mp3 प्लेयर क्लास का. तो कैसे बनाओगे? हाउ विल यू मेक इट? नाउ हियर इट इज, आई एम गोइंग टू राइट. Now first we write, what is the syntax? First we write class name. What is the name of the class? mp3 player है ना. So write here mp3 player, name of the class. Then name of the object. What is the name of object? Sound. So write here sound. Then is equal. Then we use new. Then we write class name. What is the name of the class? mp3 player. Then we write what? Brackets and then semicolon. Right? So this is how you will make the object. Clear? Fine. Moving on to next. One more term was there. Now you have learned how to create the object. Now the process of creating an object is known as instantiation. Look at here. One question is there that is also important. In your fill in the blanks it is given that the process of creating the object is called. जब हम कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? तो अभी जब हमने स्टडी किया कि ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, एक्चुअली दिस प्रोसेस इज नोन एज इंस्टेंशिएशन. राइट? रिमेंबर दिस टर्म. नाउ हियर इट इज. What is the use of these three? Look at here. We are writing what? Class name, object name, new, class name. So here it is declaration, instantiation and new. So instantiation we have studied. What is instantiation? To create the object of a class is called instantiation. ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी. अब आता है डिक्लेरेशन. क्या होता है? तो डिक्लेरेशन का मतलब क्या होता है कि इट यूजेज अ क्लास एज द डेटा टाइप अलॉन्ग विद एन ऑब्जेक्ट. यानी कि हम क्या करते हैं, जब डिक्लेरेशन का मतलब होता है कि मतलब डिक्लेयर करना, मतलब बताना, डिफाइन करना कि हाउ यू आर गोइंग टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल इफ आई राइट लाइक दिस, क्लास नेम fruit, object name apple. So this is called declaration. So declaration means what? This apple is an object of which class? Fruit class. This is known as declaration. Right? And when you write the complete sentence like fruit, banana is equal to new fruit, then this process is known as instantiation. What is the use of new keyword? This is again the most important question again, कि use of new keyword. जब आप ये new लिखते हैं यहाँ पे, इस new का क्या मतलब है? What is the meaning of this new? So this keyword new is used for allocating space in the dynamic memory for storage of an object. Means what? It means when you create any variable or when you create any object, so obviously when you are creating it, it will occupy some space in the memory. यानी कि आपको पता है कि सीपीयू के अंदर क्या होता है? मेमोरी होती है ना, जिसपे कि कुछ टास्क परफॉर्म आप करते हो. ऑब्वियसली जब आप कुछ वेरिएबल्स में वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर टेकिंग a इज इक्वल टू 5, सो ऑब्वियसली दिस 5 वैल्यू विल गेट स्टोर समवेयर इन द कंप्यूटर. कहीं तो जाके स्टोर होगी ना. इफ़ यू आर राइटिंग a इज इक्वल टू 5 + 2, सो ये जो 5 + 2
आंसर कैलकुलेट कर रहे हो, यू विल गेट द आंसर एज 7, बट बिफोर यू विल एक्चुअली गेट दिस आउटपुट ऑब्वियसली इट विल गेट स्टोर समवेयर. 7 कहीं ना कहीं तो कंप्यूटर के अंदर स्टोर होगा ना, मेमोरी के अंदर. ठीक है, उसी तरीके से व्हेन यू विल क्रिएट द ऑब्जेक्ट, सो ऑब्जेक्ट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ वेरिएबल दैट नीड्स सम काइंड ऑफ स्पेस इन द मेमोरी टू स्टोर. लेकिन वो मेमोरी उसको मिलेगी कैसे, उसको कहाँ जाना है मेमोरी के अंदर, कहाँ पे स्टोर होना है. सो फॉर दैट पर्पस वी यूज़ न्यू. सो न्यू इज़ एक्चुअली अ कीवर्ड. ये एक ऐसा कीवर्ड है दैट एलोकेट द मेमोरी टू द ऑब्जेक्ट. यानी कि ये क्या करता है, मेमोरी देता है ऑब्जेक्ट को स्टोर होने के लिए, राइट. सो न्यू इज़ यूज फॉर एलोकेटिंग स्पेस इन द मेमोरी. मेमोरी में कहाँ पे जाके उसको स्टोर होना है, कहीं पे वो जाके स्टोर होगा ऑब्जेक्ट, क्योंकि ऑब्जेक्ट की अपनी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स और बिहेवियर है, तो वो अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स और बिहेवियर को स्टोर करेगा कहीं ना कहीं मेमोरी के अंदर. सो फॉर दैट पर्पस न्यू कीवर्ड इज रिक्वायर्ड. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट. नाउ हियर वी हैव टेकन वन मोर एग्जांपल, क्लास कार. Now we have taken one real world example, class car. Now car is of many types. अब यहाँ पे जो car ये जो है that is actually a class which can have many objects. We have taken here 3 objects. First is nano. Nano is the object. Honda is the object. Maruti is again object. So 3 objects are there and the name of the class is car. Right? Look at here. Class car. We have created class car. यहाँ पे देखो class car. Okay. Now, you know what? Each real world object will have its own characteristics and its own behavior obviously. अब कार की क्या क्या characteristics possible हैं? Car can have its own color as well as its model, right? And what is the behavior of it? किस लिए use करते हैं? For journey, for demo. दोनों ही purpose के लिए we can use car. Okay. Now, this is for real world. ये जो एग्जाम्पल अभी दिया हुआ है यहाँ पर, दिस इज फॉर रियल वर्ड ऑब्जेक्ट. नाउ कंसिडर कार एज अ सॉफ्टवेयर ऑब्जेक्ट. कंसिडर कार एज अ सॉफ्टवेयर ऑब्जेक्ट. नाउ दीज 3 आर एक्चुअली द ऑब्जेक्ट्स. दिस एंड दिस आर द ऑब्जेक्ट. एंड इफ यू वांट टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस, हाउ विल यू क्रिएट इट? अब मुझे ये बताइए, अभी हमने डिस्कस किया है हाउ टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास. नाउ आई वॉन्ट टू क्रिएट दिस नैनो ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास कार. हाउ आर यू आर गोइंग टू क्रिएट इट? So syntax क्या होता है? First we write the class name. Now tell me the name of the class. What it is? Car. Good. Car. Then we write what? अभी हमने जैसे fruits का बनाया था, in the same way we will make it. Now next is the, what is the name of object? Nano. Very nice. Nano is equal. Then we write new. Then we write name of the class. What is the name of class? Car. Look at here, C is capital, so you will make capital. Okay, then we use parenthesis and then semicolon. Is that so? Done? Good. Now try to create yourself this Honda as an object of class car. How you are going to create it? कैसे बनाओगे इसको? Write it here. Name of the class car. Name of the object Honda is equal new. Name of the class car and then brackets semicolon. Right? In the same way you will make for the third one, Maruti. So this is actually the example of software object. This is software object. सॉफ्टवेयर ऑब्जेक्ट इस तरीके से बनाते हैं, और यही चीज़ अगर आप रियल वर्ड ऑब्जेक्ट में बात करोगे तो आप सिंपली डिस्क्राइब कर सकते हैं. ठीक है. नाउ नेक्स्ट अगेन, look at here, important point I have marked here. The keyword new is used to allocate space in the dynamic memory for the storage of data and functions belonging to an object. This one I have marked as important. Moving on to next. Yes, now as the objects of class car have been created, they will follow the structure as this. Now you know what, these 3, Honda, Nano and Maruti, what are these? क्या है ये? ऑब्जेक्ट्स हैं कि क्लास है? दीज आर ऑब्जेक्ट्स. गुड, दीज आर ऑब्जेक्ट्स. दीज 3 आर ऑब्जेक्ट्स. राइट. नाउ ईच ऑब्जेक्ट्स यू नो विल हैव इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ओन बिहेवियर. अब आपको पता है क्या कि कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी होती हैं? डिफरेंट. एंड बिहेवियर इज़ व्हाट? कॉमन. भाई यूज़ तो सारी चीज़ों का सेम है. अगर मैं किसी भी कार की बात करूँ, इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट होंडा, नैनो, मारुति,
all are used for the same purpose for traveling. आप ट्रैवलिंग के लिए ही कार का यूज़ करते हो ना, बट कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर ईच एंड एवरी कार विल बी डिफरेंट. भाई किसी कार का कलर अगर येलो है, किसी कार का कलर रेड होगा, किसी का वाइट होगा, उसकी साइज़ अलग होगा, उसका मॉडल अलग होगा. मीन्स कैरेक्टरिस्टिक्स अलग हो सकती हैं, बट जो बिहेवियर, उनका जो यूज़ है, दैट विल बी सेम थ्रू आउट. राइट नाउ लुक एट हेयर फॉर द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स वी हैव कंसिडर्ड हेयर फॉर होंडा. For Honda, color, color, color we have taken, then model, model and model we have taken. So these are actually the characteristics. ठीक है. So for Honda, suppose I'm going to take the color as white, model take any one. Same for this, color something else, model something else, then for this, color different, model is different. So characteristics may be different but behavior is common. तो behavior हमने every time we are not writing it again कि journey and demo, journey demo and journey and demo 3 times नहीं लिखेंगे. क्यों? बिकॉज यहाँ पे अलग हो सकते हैं, कलर मॉडल सबका अलग हो सकता है ना, लेकिन जो बिहेवियर है वो तो कॉमन है. सो देर इज नो नीड टू राइट इट अगेन एंड अगेन. सो लुक एट हियर, behavior is common, that's why we have written it only once in a single box, right? Okay, in the same way one more example is given here, flower. Now here we are having a flower class. So class का name क्या है? Flower. So class flower and each flower will have its own characteristics and own behavior. Characteristics में उसका हमने लिया है कलर और उसकी स्मेल, है ना. हर किसी फ्लावर की अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं. क्या हो सकती हैं कैरेक्टरिस्टिक्स? उसका कलर भी हो सकता है, उसकी स्मेल हो सकती है, उसकी फ्रेगनेंस भी हो सकती है. ठीक है. एंड बिहेवियर क्यों हम यूज़ करते हैं फ्लावर्स को? वी यूज़ इट फॉर डेकोरेशन, वी यूज़ इट फॉर वर्शिप. एंड हेयर वी हैव टेकन 3 ऑब्जेक्ट्स, रोज, लिली and lotus. These 3 are object number 1, object number 2, object number 3. Look at here more clearly. Now if I ask you one question that make a object rose of a class flower, how will you make it in case of software object? ये तो अभी रियल वर्ड का एग्जाम्पल गिवन है. अगर मैं ये बोलूँ कि क्लास एक फ्लावर बनाइए और उसका एक ऑब्जेक्ट बना कर दिखाओ रोज, कैसे बनाओगे? सिंटेक्स इज व्हाट? वी राइट फर्स्ट क्लास नेम. क्लास का नेम क्या है? फ्लावर. सो राइट हियर फ्लावर. देन नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट इज रोज, then is equal to new, then name of the class again flower, brackets, semicolon. So this is how you will make the object of a class. Clear? In the same way, if I want to make the second object lily, so you will write here flower, lily is equal to new flower. In the same way, you will make for the third one, flower, lotus is equal to new flower, brackets, semicolon. Done? So this is how, please learn it how to make the object. This is the only syntax, you cannot change the syntax of it. मतलब आप उसको लिखने का तरीका चेंज नहीं कर सकते हो. You have to learn it in a single way only. Next, one more. Now we have taken here for rose, lily and lotus. Different characteristics होती हैं. अभी हमने पढ़ा है कॉमन बिहेवियर होता है. दैट मीन्स ऑल द फ्लावर्स आर यूज फॉर डेकोरेशन, फॉर गार्डन, फॉर वर्शिप, बट कैरेक्टरिस्टिक्स विल बी डिफरेंट. लाइक फॉर रोज कलर इज रेड, स्मेल येस, ठीक है. देन फॉर लिली कलर इज येलो, स्मेल येस, ठीक है. देन फॉर लोटस कलर इज पिंक, स्मेल नो. दैट मीन्स नो स्मेल इज देयर. क्लियर? सो इस तरीके से आप बता सकते हो. देखो कैरेक्टरिस्टिक्स सबकी अलग है यहाँ पर. कैरेक्टरिस्टिक्स आर डिफरेंट बट बिहेवियर इज कॉमन फॉर ऑल द फ्लावर्स. सो दैट्स वाई वी कैन से, अब मैं बार बार ये चीज़ रिपीट कर रही हूँ बिकॉज दैट इज ऑल्सो देयर इन योर फिल इन द ब्लैंक्स कि डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं एंड बिहेवियर क्या होता है? कॉमन. नेक्स्ट, so here we have discussed about software classes and objects. We have discussed how to create the object. Now look at here one software example. Like we are having a class employee. So you know what, in case of software objects,
In case of software objects, characteristics are known as data members, right? And behavior is known as what? Member method, or also known as functions. So each and every employee will have its characteristics, यानी कि अपने data members होंगे, क्या हो सकते हैं? Name, department, salary. मेंबर मेथड्स का मतलब फंक्शन, यानी कि एम्प्लॉय का फंक्शन क्या होता है? अब देखो, अभी हम बात कर रहे थे कि इसके रियल वर्ड, अभी जो हमने फ्लावर का एग्जांपल, फ्रूट का एग्जांपल, कार का एग्जांपल डिस्कस किया, दैट वाज फॉर रियल वर्ड ऑब्जेक्ट, है ना? उसका फिर हमने सॉफ्टवेयर ऑब्जेक्ट्स बना के देखे। अगर ये चीज़ आप सॉफ्टवेयर ऑब्जेक्ट्स बनाओगे तो क्लासेस कैसे बनाते हैं, तो उस केस में जो फंक्शंस हम बनाते हैं एक्चुअली, वो हमने अभी डिस्कस किया था पीछे एग्जाम्पल में, कि नेम अलॉन्ग विथ ब्रैकेट्स, नेम अलॉन्ग विथ ब्रैकेट्स, है ना? This all the concepts will get more clear when we will do some exercise questions. So don't worry, just please try to understand, and if you are not getting it, then try to understand it with the help of some more examples. Here it is. Now if I having one class employee and I want to create the object of it, so object हमने consider किया staff1 is equal to new employee, this is object number 1. In the same way we are creating the second object is staff2. In the same same way we are going to create the third object, staff number 3. So here staff 1, staff 2, staff 3, these three are what? Class or object? Object. And these employee, these is what? It is the name of class, right? Now again here it is given. Now try to understand it yourself. We have already explained so many examples we have done. Now staff 1, staff 2, staff 3, these are actually the objects, and each objects will have some characteristics and name, department, salary, name, department, salary, name, department, salary. और यहाँ पे ये क्या है? फंक्शंस, मतलब बिहेवियर। बिहेवियर क्या होगा आपका? कॉमन होगा, तो आप कुछ भी बना सकते हो। जैसे हम क्या बना सकते हैं? इन प्लेस ऑफ दिस आई कैन मेक हियर इनपुट एंड आउटपुट, और आई कैन मेक हियर गेट, कुछ भी बना सकते हो, ठीक है? एंड पुट, डिपेंड्स ऑन अस, राइट? वन मोर थिंग हियर, like for staff number 1, for first object we are taking name as Amar, department as this, salary as this. For the second object staff number 2, name is something else, department is something else, salary is something else. Same for staff number 3, name this, department this, salary this. Okay, now after this, the last thing that we are going to discuss here, look at here. Yes, now using object, if I want to access any function, so how we are going to use it? ये बहुत ही important point है. If using object I am going, if I want to call a function, अब हमने एक function बनाया, देखो यहाँ पर accept data and display data, and I want to call this. So how many objects we are having? 3, staff 1, staff 2, staff 3, and we are having two functions here, accept data and display data. Now अब मुझे क्या करना है? staff 1 से इसको access करना है, staff 2 से भी access करना है, and I want to access this using staff 3 also. So कैसे use करते हैं? With the help of dot. Look at here. If I want to call the function accept data using staff 1, so I will write staff 1 dot is compulsory, accept data. If I want to use accept data using staff 2, so I will write staff 2 dot accept data. If I want to use display data now using staff 1, so I will write staff 1 dot display data. In the same way, now tell me, if I want to use display data using staff 3, तो कैसे करोगे? staff 3 dot display data. यानी कि इसका मतलब क्या हुआ? It means object name dot function name. This is how
we will call a function, we will access a function using object. Using what? Object. Clear? So this is also very important. Please go through this from your book. This is very important concept, like how to create the object of the class and how to access the members of a class using objects. That is the very important point, right? Then in the next video, we will discuss one more example of product. If you are having book, then try to understand the next example. Try to solve it yourself. Try to understand it yourself. Otherwise, in the next video, we will start it from here onwards. Okay? And then in the next video, we will discuss some of the remaining part of this chapter plus question answers. Right? So for today, it's enough. Thank you. Good day.